मैं आज ये बैग का रिव्यू करूँगी। दिस इज़ अ स्काई बैग, लैपटॉप बैग, एंड इसके साथ एक रेन बैग आता है, रेन कवर आता है। It has 5 compartments. It's made of polyester, and the chains are also nice. So I'll be just putting it all in front of you, and let's see how this bag is. So ये रहा बैग, and as I told you, ये वाला कलर थोड़ा सा अलग है। इसका कलर थोड़ा अलग है, but it's okay, I think. So they told us 3 compartments, and it's made of polyester. Okay, let's get inside of this. Zippers are nice. So this is one. यहाँ पे you have a not bad. ये अच्छा है. This is also there. So you can keep brush and all that here. I can keep some sort of wet items here. यहाँ पे एक कंपार्टमेंट है, but it's very small. I mean, this is very small, I think. What will I keep it here? I don't know, honestly. I think it's mainly looks के लिए आता है ये शायद. वो पहनने के बाद पता चलेगा. Wow, this is quite big, I think. यहाँ पे एक भी है. मटेरियल काफ़ी अच्छा है. नाइस. और ये बहुत ओपन भी होता है, मतलब इट्स नॉट लाइक. ठीक है, नाइस. ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, जैसे कि सफारी का बैग आता है 35 लीटर या 40 लीटर का, वैसा नहीं है. बट आई थिंक दैट वाज the problem with big bags is that you don't get quality bags here in India. So let me try to put some items here.
that this is good for office purposes, but not like अगर आप 2-3 दिन के लिए कहीं जा रहे हो, ये बैग नहीं है उसके लिए. इसमें आता है रेन कवर भी आता है, बट आई थिंक दैट ये जो बैग है इट्स गुड फॉर कैरिंग लैपटॉप. एक टिफ़िन बॉक्स ले सकते हैं आप बड़ा वाला, और छोटा मोटा आइटम्स लाइक एक दिन के लिए एक रात के लिए अगर आप रह रहे हो कहीं भी तो दैट इज़ फाइन, बट नॉट लाइक 2 to 3 days. So overall the pros would be the material is really good. It's gonna last I think for at least 5 years I think for sure. Or chains are really good. I think chains are very good. यहाँ पे ऐसे भी है, I can lock it also like this. Chains अच्छे हैं, and the feeling of just holding this bag was also nice because मेरे पीठ में उतना ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा था because I have a problem in my back. So that is also nice, but for that I'll have to see more. I think one of the main problems that Indian bag companies have, that they don't really make something ergonomic. So जैसे कि बिग बिलियन बैग है, वो मतलब कैरी करना बहुत आसान होता है, बट उसका प्रॉब्लम ये है कि उसका लैपटॉप का कंपार्टमेंट इतना अच्छा नहीं है जो यहाँ पे है. इट्स वेरी गुड. You can actually carry 2 laptops here, Yeah. So that's all from my side. Just let me know what you think about this bag. If you think that I should make any more videos about anything else, check out my other videos also. If you like it, then please maybe a like or subscribe. Thank you.